डियर स्टूडेंट, आई नो दैट आप सभी लोग नीट जेई और सीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स वी स्टार्ट. सो नाउ टुडे वी हैव टू सॉल्व द एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क. आपको शेप अच्छे से याद रखना है. यूनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड सिलेंडर परफॉर्मिंग द रोलिंग मोशन. आपको रोलिंग मोशन पता है. द बॉडी possesses both translation as well as rotational motion. So whenever, now this is the diagram we draw here, that is for uniform disk or solid cylinder. Now it's performing the rolling motion. Whenever it's performing the rolling motion, we have to understood some notation. So now here u, v and w. So u be the initial speed of the body. जब ये start होगा तो उसका speed 0 रहेगा. v be the, when it's performing the rolling motion, v be the translational speed. It's performing the rolling motion. Omega be the angular speed. Then r be the radius of the disc or solid cylinder, radius of a body. Then m be the mass of the body. The most important part, that is, you have to remember what is the moment of inertia of uniform disk or solid cylinder. So remember, this is the most important formula. The moment of inertia of a uniform disk or solid cylinder is, that is, I equal to half mr square. ये सबसे important formula है, आपको याद रखना है. I equal to half mr square. और इसको हमें कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड फार्मूला. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फार्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन? दैट इज mk square. सो दोनों को इक्वेट करना है. आफ्टर इक्वेटिंग both, so what we get after equating both? So that is mk square is equal to half mr square. So on both side mass get cancelled. Take the ratio of radius of gyration divided by radius of the body, that is k square by r square is equal to what? 1 half. So we get the ratio of k square by r square equal to 1 half. The question is very easy. बस हमें अभी पता होना चाहिए what is the energy of body. So whenever body performing the rolling motion, उसका फार्मूला आपको याद रखना है. फार्मूला is very easy. So that is E equal to half mv square into bracket 1 plus k square divided by r square. This is the formula. According to that formula, we can calculate when the different shapes are performing the rolling motion. So we have to just substitute the value of k square divided by r square into this expression. So now we get the energy of uniform disk or solid cylinder. So let's we start. Equal to half, अच्छे से इसको राइटिंग करना है, हाफ mv square 1 plus, substitute the value 1 by 2. Take the cross multiplication. What we get the cross multiplication? 2 ones are 2, 2 plus 1, that is 3, 3 by 2. So what we get? Equal to half mv square into 3 divided by 2. So इसको मल्टीप्लाई करना है. डिनोमीटर में दोनों 2 है, so 2 2 becomes 4. न्यूमरेटर में 1 3 are 3 mb square. So this is the most important formula you have to remember, that is E equal to 3 by 4 mv square. So in such way that we derive the expression for energy of body, and body becomes, that is, uniform disk or solid cylinder performing the rolling motion. Most importantly, remember the moment of inertia formula, half mr square. आफ्टर दैट उसको कंपेयर करना है. आफ्टर कंपेयरिंग ये फार्मूला आपको याद रखना है. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, आप इजीली याद रख सकते हो. और आफ्टर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, सो वी गेट द फाइनल आंसर, दैट इज 3 by 4 mv स्क्वायर. सो ये फार्मूला आपको याद रखना है ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके जो भी नीट जेई और सीईटी के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको समझ में आया होगा. और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज़ इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है. थैंक यू वेरी मच.